सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यानमाला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और प्रत्येक शुक्रवार की तरह आज भी हम एक नए स्पीकर के साथ, नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद को भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करवाने के और नजदीक आते हुए, मुझे लगता है कि एक दिन तो जरूर ये होगा, तो हम तो नजदीक जा ही रहे हैं। तो ऐसे शुभ अवसर के लिए हम सभी अनेक स्पीकर के योगदान से इस सीएमई लेक्चर सीरीज को ज्ञान यज्ञ की तरह आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं। उसको और आगे बढ़ाते हुए मैं आज के स्पीकर का आप सभी के सामने परिचय रखना चाहूंगी। आज के स्पीकर है डॉक्टर सिपिका स्वाति। आपने अपनी अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई आईएमएस बीएचयू वाराणसी 2012 में पूरी की और आप गोल्ड मेडलिस्ट भी है। एमएस प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में 2015 में आपने पूर्ण किया, वो भी सेम इंस्टीट्यूट आईएमएस बीएचयू वाराणसी। पीएचडी इन इटरा 2024 जामनगर से आप है। और आपने एक सर्टिफिकेट कोर्स भी किया हुआ है, सर्टिफिकेट कोर्स इन योग एंड योग प्रैक्टिसेस एंड डिप्लोमा इन योगा, वो भी बीएचयू से आपने पूर्ण किया है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी कोर्स आपने पूर्ण किया हुआ है। वर्तमान समय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में इटरा आईटीआरए जामनगर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी 2016 से आप कार्यरत है। आपके पास 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। आपने 3 सीएमई को अटेंड किया है। बहुत सारी वर्कशॉप में भी आपने अलग अलग नेशनल लेवल पर अनेक ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी प्राप्त किया है, उसमें ट्रेनिंग आपने ली हुई है। इसके साथ आपने पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत सारे विविध स्थानों पर अपने अपने समय पर किया है और इनवाइटेड लेक्चर्स में भी आपकी हमेशा सहभागिता रहती है। पीयर रिव्यूड और रिव्यूड नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में भी आपकी सहभागिता लगातार बनी रही है और 19 से ज्यादा पेपर आपने अलग अलग जगह पर लिखे हैं, जो पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स में अपना स्थान रखते हैं। आपने कोर्स मॉड्यूल डिजाइनिंग में भी गर्भिणी रक्षक मॉड्यूल फॉर ट्रेनिंग फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल अंडर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में आपने उसमें भी अपनी भूमिका निभाई है। अदर एक्टिविटीज में भी आपका सीसीआरएस के साथ रिव्यूअर फॉर द स्कीम फॉर ट्रेनिंग इन द आयुर्वेदा रिसर्च फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स की उसमें आपकी सहभागिता है। और एज ए रिव्यूअर भी आप विविध जर्नल में आपकी भूमिका निभा रहे हैं। और जो अवार्ड्स है, जो इससे मैंने पहले बताया कि बीएमएस में आप गोल्ड मेडलिस्ट है, साथ में एमएस में भी गोल्ड मेडलिस्ट है। इसके सिवाय भी प्रोफेसर डीवी सुब्बा रेड्डी मेमोरियल गोल्ड मेडल, आचार्य ज्योतिर्मित्र गोल्ड मेडल, लेट पंडित विद्याधर दुबे गोल्ड मेडल, आचार्य वैद्य यदुनंदन उपाध्याय मेमोरियल गोल्ड मेडल एंड बेस्ट पेपर का भी आपको एक बार 2023 में इंटरनेशनल जननी सिंपोजियम में अवार्ड मिला हुआ है। तो ऐसे विद्वान स्पीकर को मैं आज यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि अनवरत चलती इस व्याख्यानमाला में डॉक्टर साहब ने अपना समय का योगदान दिया और बिल्कुल ज्ञान का भी। तो आज का अपना टॉपिक है आयुर्वेदा अप्रोच टू पुत्रघ्नि योनिव्यापद विद स्पेशल रेफरेंस टू आरपीएल ड्यू टू टॉर्च इन्फेक्शन। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब, वेलकम। धन्यवाद मैम। मैम ने कुछ ज्यादा ही बोला है, पर फिर भी मैम हमारे सीनियर है, हमारे गुरु भी हैं। मैम के भी बहुत सारे लेक्चर हमने सुने हैं यहाँ पे सीएमई से और काफी प्रभावित भी हूँ मैम हमसे। और मैम ने हमें इस सीएमई और इस प्लेटफॉर्म पे जो मैम का एक कह सकते हैं कि काफी सराहनीय कार्य है जो मैम आयुर्वेद की प्रगति के लिए, और एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पीटीएसआर फ्रेटर्निटी के सभी अपना विचार विमर्श रख सकते हैं और अपने जो अनसुलझे क्वेश्चन आंसर है उनको डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मैम ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए मैम का बहुत बहुत आभार। और आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए मैम ने जो अवसर दिया है उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं अभी सारे ऑडियंस का भी वेलकम करती हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, क्योंकि मैम का ऐसा कहना था कि टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो क्लिनिकल हो और जिससे हम सभी लाभान्वित हो सके और हम
मैं ऐसा भी आशा करती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स जो भी जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, हम जो भी ये टॉपिक है, ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम अपनी ओपीडी में काफी ऐसे पेशेंट्स होते हैं और मिलते ही रहते हैं। तो मैं इसमें सबकी सहभागिता और एक्टिव पार्टिसिपेशन की भी अपेक्षा रखती हूँ। तो मैं अपना पीपीटी शेयर कर रही हूँ। इज इट विजिबल मैम? यस डॉक्टर साहब, जी विजिबल, यस यस। मैम स्लाइड शो है मोड में? स्लाइड शो मोड पे नहीं है वो। ओके हाँ मैं, हाँ जी, मैं करती हूँ कंटिन्यू स्लाइड करते शो। हैं जी। मैम अभी है? नहीं डॉक्टर साहब, अभी वही दिख रहा है। मगर कोई चलो बात नहीं, ये जो साइड की स्लाइड है ना, वो थोड़ी सी आप छोटी कर दीजिए, इसमें भी काफी अच्छा दिख रहा है। फिर से करती हूँ क्योंकि यहाँ से हो गया है। मैम अभी देखिए, फिर से वैसे ही है। नहीं डॉक्टर साहब, वही है। जो ओके। साइड में जो 4 स्लाइड दिख रही है ना, उसका जो वो कर्सर लेके यस थोड़ा मैम। छोटा कर देंगे ना, तो वो काफी बड़ा ही हो जाता है, चलेगा। फिर से शेयर करती हूँ। हाँ जी, कोई बात नहीं। This topic is Ayurveda approach to Putraghni Yonivyapad with special reference to repeated pregnancy loss due to torch infection. So जैसा कि हम सभी जानते हैं that आचार्य चरक says about the importance of स्त्री as the progeny depends on स्त्री, धर्म अर्थ and लोक also depends on स्त्री. स्त्रीषु अपत्यम प्रतिष्ठितम धर्म अर्थ स्त्रीषु. And the importance of a healthy female is denoted by the definition of स्त्री. स्त्रियायते अस्याम गर्भ इति स्त्री. That is a body where गर्भ gets impregnated and receive nourishment is called the स्त्री. So आप देख सकते हैं कि जो स्त्री का डेफिनेशन दिया है आचार्यों ने, उसके मूल में ही प्रोजेनी और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेनी और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गर्भ, ये मूल में ही इसके निहित है। और हमारा जो टॉपिक है रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस, हम सभी जानते हैं कि कभी भी जब भी हम इनफर्टिलिटी के पेशेंट को ट्रीट करते हैं एंड कभी कभी बहुत ही मेहनत के बाद सफलता से हम ट्रीट भी करते हैं और इंस्पाइट ऑफ दैट बहुत बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनमें प्रेगनेंसी लॉस या गर्भपात या गर्भस्राव की समस्या होती है, या कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो पहले से ही डायग्नोस्ड होते हैं, 3 या 4 बार उनको गर्भस्राव या गर्भपात हो गया होता है। तो अगर इसके मूल में हम जाए तो देखें तो द बर्थ ऑफ अ ह्यूमन चाइल्ड इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस and we know that the success of a pregnancy outcome depends on the development of protective humoral response of mother to paternal antigens expressed in early pregnancy. As we all know that during pregnancy the mother immunological system shifts from cell mediated immunology to humoral immunology. It is a protesting or defense mechanism of the nature what it has created or given during the time of pregnancy to the mother to accept easily the graft, that it is the fetus is like a graft or it is an antigen to the mother because it contains the paternal chromosome also which acts as the antigen to the mother. But the change or shifting of the immunological pattern during pregnancy helps a mother to easily accept that antigen or accept that fetus. So if any process which hinders in this process or any causative factors which is hindering this process, it may cause repeated pregnancy losses. And it is defined as 3 or more consecutive pregnancy loss before the period of viability, 20 weeks, or loss of fetus weighing less than 500 grams. Most of the pregnancy losses are unrecognized because we all know that many a times during the phase of recognition of UPT positive, before the UPT positive patients comes with us to us with UPT positive, the normal periods may occur or the fertilization process has been happened. In spite of that, the periods can come. So patient not yet diagnosed that I was pregnant or I was going to be pregnant in this cycle. So most of the pregnancy losses are unrecognized. About 70% human conception fails to achieve viability. Estimated 50% are lost before the first menstrual period, what I was talking. Actual rate of pregnancy loss after implantation, when UPT becomes positive, then after that pregnancy loss, it encounters or it gives 30% prevalence. And clinical recognized losses occurs in 15% before the 20 weeks of gestation. So you can see the data. So the prevalence in our OPD patients, it just reflects this data that how much this
scenario is very common in the patients. And what are the risk factor which is imparting to the repeated pregnancy loss? One or more second trimester losses is a strong risk factor with a poor prognosis. Once we take the history and patient says that I have one or two pregnancy losses, so it gives, it reflects or it clicks in our mind that we have to protect this patient and we have to just treat this patient vigilantly, either because there might be a risk that she may land again in the same problem. And maternal age is also associated with decline in number and quality of oocytes. We all know that nowadays premature ovarian failure, these cases are rising. So the quality of oocytes becomes one of the most common risk factors. Obesity also, because it just disbalances our hormone, so it increases the risk of both sporadic and recurrent miscarriage. I hope you all know that sporadic is isolated or single pregnancy loss, and recurrent when it is two or three, more than two pregnancy losses. Environmental factors. Nowadays, it is very common factor: cigarette smoking, caffeine, alcohol consumption, even the stress factor triggering this cascade. It is also now a common these days. However, the prognosis of primary and secondary live birth rates are similar. We know that primary RPL is that if a patient don't have any viable child, and secondary RPL if patient have one or more viable child, and after that she has recurrent pregnancy losses. So higher late obstetric complication rates have been noted in primary RPL. What are the factors which are playing role in this RPL? We know anatomical abnormalities, endocrine disorders are very common, and 50% goes to the genetic defects, that is chromosomal abnormality, autoimmune disorders, thrombophilia, and infection. And we know that only 50% of RPL, we can say that it has defined etiology, and 50% are idiopathic. Coming to the common causes of genetic factor, which is very common in first trimester pregnancy loss. So it may be due to a parental chromosome abnormality, and very common causes are translocations, aneuploidy of chromosomes, and it causes 50% of first miscarriage. And we know that balanced translocation, we have a figure. We will look in this picture. I have just quoted all the abnormalities. You can see here, balanced translocation means there are two chromosomes. When the exact number of chromosome can be just plotted on another chromosome, but the number will be same. So we call it as balanced translocation. What's happened in this type of patients? Most of the patients can have pregnancy uneventfully, but 40 to 50% patients have RPL. And if pregnancy becomes uneventful by luck, by chance, then in its progeny, when this female is born, okay, and it is her marriage is with other men who have already another type of translocation. So this balanced translocation and other unbalanced translocation may lead to have a progeny which in coming future may land into repeated pregnancy loss. So balanced translocation are very common, and we can see in the karyotyping when we do karyotyping, and it is the commonest cause of recurrent pregnancy loss, which can be diagnosed in karyotypes. And mosaicism is also very common. Inversion are very common. What are the investigation? So karyotyping, we all know that karyotyping of both parents, couple, and sometimes the karyotyping of product or conception also helps in these cases. If there is normal karyotype, so we have to look about the other causes. And if it is there is balanced translocation or aneuploidy, something has to be detected in karyotype, so we have to treat accordingly. Sperm DNA integrity tests are common these times to note the DNA fragmentation. In these cases, genetic counseling and pre-implantation genetic correction in IVF are the options. And our Ayurveda gives very promising result in these types of cases. We will discuss it later on. Next comes the anatomical causes. We all know that uterine anomalies are congenital and acquired, what we can classify. Congenital, it is due to abnormal formation or fusion of Mullerian duct, and it may lead to many type of deformity in the uterus, we can see. And acquired,
It is fibroid adhesions, cervical incompetency, and it may cause 10 to 15% RPL. You can see this anatomical causes like you can see in the figures: hypoplasia, agenesis, unicornate, only one horn is active, and it may cause 50% loss of pregnancy, didelphus 40% loss, bicornate uterus 30%, and DES related it may land into 20% pregnancy loss. Separate uterus very common, 65 to 70% losses or due to complete or partial septa present in the uterus. And coming to the acquired uterine leiomyoma or fibroid, what we call very common these days, in especially the submucous myoma, which is just hindering the endometrial cavity or disforming the endometrial cavity, may cause some fertility issue also, subfertility also, and it may cause the recurrent pregnancy loss also. But subserosal and intramural under 4 to 7 centimeters, they don't hamper the result of pregnancy. Intrauterine adhesions, common these days also. When a patient, in this intrauterine adhesion, history is very important. If you ask the history of the patient and see has undergone some procedure like DNC or Curitas, so it may, and after that she has scanty menses or amenorrhea, then you might suspect that it may be the case of intrauterine adhesions. So insufficient, how it causes, because there is insufficient endometrium which can support the fetoplacental growth. So the patient may land in repeated pregnancy loss. We can diagnose it by menstrual irregularity, what I told, scanty or no withdrawal bleeding after sequential treatment. And when in this type of patient, when we give the PCT, progesterone challenge test, are always negative. So by this we can diagnose this type of patient, and history is also important. Cervical insufficiency, we know that this is the very common factor which is causing repeated pregnancy loss in second trimester, after third month, fourth and 5th month. It is very common. It can be congenital due to Mullerian tube defect or DES exposure in uterus, and it may be acquired, like forceful mechanical cervical dilatation is done, or cervical cauterization or laceration, or cervical cone biopsy, or any procedure. If patient is giving history and after that she has second trimester loss, so we should look forward for this cervical incompetency test, and we should take care of this patient vigilantly. And diagnosis, very common and very good diagnosis. If we do in our OPD also, if Heger's 8-number dilator, if in the premenstrual phase you will ask the patient, and if you will do PSPV examination, then during this examination, if you pass the 8-number Hegel dilator beyond internal loss, so it will pass very smoothly without any resistance. When we pass anything, either uterine sound or dilator through the internal os, so we feel a resistance there. So when it passes smoothly, so we can just suspect that the patient might have cervical incompetency, and it will be painless most of the time. And when we withdraw it, there will be no any snap on withdrawal. So we can diagnose that this patient might have cervical incompetency. So prior to planning the pregnancy, you should do this examination for the easy diagnosis of cervical incompetency of the patient. During pregnancy, we know that in USG there is shortening of the cervical length, funneling of the internal os, and cervical length will be gradually decreasing in this type of cases. So what are the treatment? We know cervical cerclage has been done, and there are very myths and cons, and very benefits also, and many times side effects also. Many times it can cause uterine irritability, and we have seen many patients which we have posted for cervical encerclage, and after encerclage, after 1 or 2 days, there might have severe contraction, and patient landed into expulsion of all the product. So this procedure has to be planned very carefully, and these are some contraindication I have posted here. Any type of intrauterine infection, and if membrane is ruptured, we know we cannot do this thing. If patient have history of spotting bleeding, so it is better to avoid this cerclage.
And if patient have irritable uterus or more than 4 centimeter dilatation, we cannot do because it will be not beneficial. Nowadays, in many patients, abdominal sulcras has also been done with advanced equipped methods. Next, coming to the endocrine factors, and here this is our field. In this field, we can work tremendously with Ayurvedic approach. We know that there are four main factors like thyroid. It is playing a crucial role in maintenance of pregnancy and in maintenance and conception also, and diabetes mellitus. Again, if a patient is diabetic, her blood sugar is not controlled, it will patient might land in repeated pregnancy loss, or she might also face some fertility also. PCOD very common nowadays, and it is very challenging issue, and every day new things are coming in the picture of PCOD. Previously there was no any division. When we are doing MD, hardly we get one or two patients in our video of PCOD, and nowadays out of 10 patients, 5 and 6, even 7 patients are of PCOD, representing with different clinical features. Not every patient have same clinical feature. Some may come to you with infertility, some with irregular menses, some with only hirsutism, and also there are two phenotypes divided, lean and obese. Okay, so it is a very challenging issue this time. And next comes to luteal phase defects. Many a times it has been ignored by obstetrician also, that because it's diagnosis process, we can easily diagnose LPD by taking the keen history of the patient vigilantly. But if we go in the investigation, we have to go for progesterone. So many times it slips from our mind if we don't take proper history of menstrual cycle of that patient. So it is very important to take care of this factor also. Diabetic DM, I have already told that increased blood glucose and HbA1c level, and the risk of loss will be increased. How we can diagnose luteal phase? Let us discuss some points. The short cycle in every patient, every patient, once we ask our patient to go for ovulation profile, hair sonography is free for most of the patients. So in infertility patient, most of the patient we post for follicular study. What you have to see after ovulation, if you are treating patients for infertility, if you have given some ovulation induction drug, Ayurvedic drug, see after ovulation, after ovulation, how much days after that phenomenon your patient starts having menstrual cycle. If she is not conceiving, menses can be thought, okay, in the whatever we have done, we will plan next. But here is the alarming sign. You have to see the date of ovulation and the date of her periods, when her periods come. If it is 14 days, then it is fine. 14 days or more than that. If it is less than 12 or 10 days, then you have to suspect for luteal phase deficiency. It is very important to see for this factor, because most of the time it is ignored by us. When we are treating, we will see the major causes, DM, thyroid, but we don't, many times we ignore this factor, and by very little what we say carefulness, we can diagnose this factor. So it is very important, and we know that the progesterone is deficient in this type of patients, and progesterone is helping in maintenance of the pregnancy. So due to lack of this, there will be inadequate secretory changes, and it might it will hinder the implantation procedure, and miscarriage will happen. And the golden standard for the diagnosis of LPD is endometrial biopsy, but it is very invasive. It is an invasive procedure, and we can do serum progesterone also, but it's costly also. So it is better to go for the history and diagnose your patient on the clinical features. But if it is not diagnosed, you cannot diagnose, you may post the patient for endometrial biopsy. Coming to the PCOD, we all know, we will not go in the detail, and we know that there will be excessive androgen production by both the ovary, and these androgen is the male culprit
which hinders with the fertility of the patient also, and the whole implantation procedure also, because we know that if there is excess of androgen, there will be hyperinsulinemia. So these hyperinsulinemia, the same, it will works as it does the role in DM patients. So it will cause the miscarriage chances also. It may cause congenital anomaly risk also in the patient if patients continues the pregnancy. I have seen in many patients. I have given from last 3 or 4 years. I have given PCOD thesis to my scholars, especially obese PCO. So what happens many a times patients conceive. She's very good with UPT positive. She think that okay, the job of the doctor is over, but it strikes in our mind that this is PCOD patient, UPT is positive. We become more careful, even more careful from that time onwards. That we know that in PCOD patient, in my clinical experience, what I have seen that the fetal cardiac activity issue is very much more. They will come to, you will give Garvastapak chikitsa or anything. If you will not treat them vigilantly, they will come, and if you will post for USC for 6 or 7 weeks, they will come with feeble cardiac activity or no cardiac activity. And if 7 weeks goes, then that thing is not in our hand. So better to be vigilant, careful, since your patient conceive. Give Garvastapak Aushadhi and try to just keep in the mind the factor that PCOD itself hinders with the implantation. So you have to treat that patient vigilantly also when it becomes UPT positive, it becomes. Hypothyroidism, we all know that it causes subclinical infertility also and increase the chances of miscarriage. Next, coming to the infection, I have taken this topic, torch infection. So infection, any type of transplacental infection, right, we can correlate it with the spontaneous loss. Like if we consider the torch, toxoplasma, and we know that rubella, chlamydia, HSV, CMV, all these are main factors we consider in torch infection. It can directly infect the fetus, and it may just cross the placenta through mother and infect the fetus. And sometimes bacterial vaginosis also in the first trimester, it may cause pregnancy loss. And many a times we just don't look forward on the look on the male factor. Many times pus cells present in the semen, we consider it as Shukradosti. Pus cells, if 10 or 15 pus cells are present in the semen, and either patients complain that there is discoloration of semen, little bit yellowish. So we have to be very vigilant that time, that this may also lead to the pregnancy loss in the patient, because semen infection many times we don't we just have all our focus on the female, but male factor we should also consider. This semen infection or presence of pus cell in the semen is to be noticed very vigilantly. Coming to the next factor, it is immunological factor, very important. And we know that both autoimmune disorders and autoimmune disorders plays a role in repeated pregnancy loss. Autoimmune, it means it is directed to antibodies are just made through to our own self tissue cell, and alloimmunity when the antibodies are just doing action against the foreign antigen. So in autoimmunity, we know that it is a very common cause for second trimester miscarriage, and APLA, what we call antiphospholipid antibodies, are very common. In spite of that, anti-nuclear antibody and anti-DNA body are very common nowadays also, and many investigations are done also to rule out these cases. Let us discuss some part of APL. It's common antiphospholipid antibody syndrome. Up to 15 to 20% of women with RPL losses have APL, and about 5 to 10% of all pregnancy are complicated by, in this type of cases, by preeclampsia or fetal growth restriction, and up to 75% lands into preterm birth. And SLE patients also have the same problem because it is an autoimmune disorder, so this they will face the same problem.
And what happens in this type of cases, there will be placental thrombosis infarction, and there will be hamper in the blood supply to the fetus. So fetal hypoxia is the main cause for the abortion. We all know that during pregnancy, when we read the placental formation, when we read preeclampsia, eclampsia chapter, we know that there are major changes happening in the spiral arteries, or there are major changes in the feto-maternal blood circulation. What happens? There is change in the vessels of maternal blood supply, and the just three types of layer we know in the vessels: tunica media, intima, and one muscular layer is also present. Due to that, vasoconstriction occur. But in pregnancy phase, due to many types of protein CES and many due to effect of many vasodilators, this all the trophoblast invasion occurs inside the spiral arteries, which helps in the dilatation of the vessels. So there will be free flow of blood to the fetus and proper oxygen and glucose supply. And the same, the opposite happens in preeclampsia. Sorry. The change doesn't occur in this feto-maternal circulation, which leads to vasoconstriction, fetal hypoxia, IGR, increase in blood pressure of the patient, and ultimately many things happen. Your patient might land in eclampsia also. So, how to diagnose one or more fetal deaths before 10 weeks of pregnancy, or one or more preterm births before 34 weeks due to severe preeclampsia or placental insufficiency? So there are lab investigation. We go for anticardiolipin antibody and lupus anticoagulant to diagnose this APLA. Heparin, we know that blood thinner heparin and ecosporin are the line of treatment, selected line of treatment. Immunity, I have discussed in the beginning that the rejection of paternal antigen, it is caused due to changes in the shifting in the immunology of mother. And normally pregnancy is tolerated by the paternal immune system through formation of antigen blocking antibodies. Here antigen is paternal antigen which the fetus is carrying. So हमें भी पता है कि अपने आयुर्वेद में हमें बोला गया है कि अतुल्य गोत्र में विवाह होना चाहिए, सेम गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं द कपल HLA, we know that human leukocyte, that antigen, if it is similar in both the parents, the couple will face the recurrent pregnancy loss. So that's why हम कभी भी हिस्ट्री लेते हैं तो कैंसिजिनस मैरिज की हिस्ट्री लेते हैं आरपीएल के पेशेंट में स्पेशली, और कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी के पेशेंट में स्पेशली. सो आप देख सकते हैं कि बहुत पहले हमारा आयुर्वेद लिखा गया था, फिर भी कितने ब्यूटीफुली अपने आचार्यों ने इस चीज को वहां पे डिस्क्राइब किया है. और हमें अभी मॉडर्न साइंस भी कहता है कि अगर कपल्स दो हस्बैंड वाइफ है और वो सिमिलर टाइप ऑफ HLA शेयर करते हैं, देन दो जो इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और ब्लॉकिंग ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन जो होती है, ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज जो बनते हैं, वो जो ब्लॉकिंग एंटीबॉडी है वो फीटस के सरफेस पे जो एंटीजन होते हैं, पैटर्नल एंटीजन, उनसे अडेयर हो जाते हैं. और जो मदर की इम्यून सिस्टम है, जो सी सेल है, टी सेल्स है, वो लिम्फोसाइट्स है, वो इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, क्योंकि ब्लॉकिंग एंटीजेंस उसको, उस सारे एंटीजेंस को ब्लॉक कर देते हैं, पैटर्नल एंटीजेंस को. सो मदर की जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है. सो दीज ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट for a continuation of the pregnancy, because we know if immune system of the mother goes playing against the fetus, so it will the mother will not carry the pregnancy onwards. So it is very important. So अपना यहाँ पे भी अपना सिद्धांत बहुत ही काम आता है कि अतुल्य गोत्र में ही विवाह होना चाहिए. Inherited thrombophilia, again, it's have a major role in causing RPL. We know pregnancy is a hypercoagulable state, and inherited thrombophilia, this process is fastened, and which leads to late fetal loss, IGR abruption, and pregnancy-induced hypertension also. Coming to our Ayurveda, what our Shastra says for this Garbhasrav or Garbhapat or repeated pregnancy loss. We know that in Mandya chapter, her
every acharya has its their own vision. Like Garvashravi Bandhya is mentioned by Harit Samhita, Mritvatsa in Madhvanidan, Kanya Prashriya in Madhvanidan. Vritrayi has mentioned it in Yonivyapad chapter, Vinshati Yonivyapad, like Ashrija, Putraghni, and Mamini, which we can correlate with this repeated pregnancy loss. And also in 80 types of Vata Vyadhi, Garbhat and Garbnash has been mentioned by Acharyas also. Looking to the Nidan in Ayurveda perspective, we know these four factors very well. Ritu, Kshetra, Ambu, Bij. These are the four factors which is responsible for the having a healthy pregnancy. And any alteration in all these factors may lead to the Garbhasrav or Garbhapat. Either it may be Ritu, either it may be Kshetra Doshti, either Ambu, proper nourishment is not there, or either Bij. All the genetic abnormalities comes under this Bij umbrella, Stri Bij and Purush Bij Vyadhi. So these were the Nidan. And Acharya Charak has specifically says that he has a Kuchavriddhi, that in first loka he is telling that whatever factors which are responsible for having a healthy pregnancy, if we just take opposite of that, it will lead to the Garbha Rash or Mrityu of the Garbh in the Kukshi. And in Sharirasthan chapter 2 is very beautifully described that Shukra Ashrig. You have to focus on this Shukra Ashrig. It means Artha and Shukra, semen. Okay. And Atma, like any problem in Atma, Karma or Purvakal Karma, Ashay, it means Kshetra Dosti. Kal Sampad means proper Ritu or proper Ritu Kal. These all factors are responsible for Garbhascha Kalecha Sukhi Sukam. सुखपूर्वक गर्भ धारण के लिए भी ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है और सुखपूर्वक गर्भ प्रेगनेंसी रहे उसके लिए भी ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और गर्भ संपूर्ण देह के साथ पैदा हो जन्म ले उसके लिए भी ये सारे फैक्टर्स का संपद होना मतलब सही पूर्वक होना. यस्य उपचार, you can see उपचार, here we know all the external factors. And Hitan, Ahar, the Hitan means all the Ahar. And Upchar, we take all the Vihar, what the mother is doing during pregnancy or in preconceptional phase. All these factors are very important for having a healthy pregnancy or for having a healthy conception also, implantation also, or for continuing the pregnancy also. Any problem in all these factors may lead to the pregnancy loss. This has been quoted by Acharya Charak. What Acharya Shushruta says, he have quoted 5 factors that Krimi, Vata, Bighat, Garbhukat, Garbhav, or any type of Garbhini Roga may lead to Garbhashra or Garbhat. Krimi, here all type of infection that like torch infection, any type of vaginal infection, sperm infection, semen infection, we can take in this umbrella. And Vat, vitiated Ahar Vihar, what causative factors all will come under this factor. It may lead to IUGR or death of the fetus also. Abhigat, any type of physical or mental, even mental trauma to the patients also may lead to the Garbhashra or Garbhapat. Garbhupkat Garbhav, very elaborately discussed by all the Acharya. We know, we will not go in the details of that Garbhupkat Garbhav. We know that many types of diets, many types of vihar has been mentioned there. Diet regimes which can cause death or teratogenicity. And it may lead to sporadic miscarriage rather than causing RPL. Garbhupkat Garbhav in that particular pregnancy, sporadic means isolated miscarriage will happens more due to Garbhupkat Garbhav. Coming to the Garbhini Roga, any type of systemic Roga or any type of Uni Roga, it will lead to repeated pregnancy loss rather than causing isolated pregnancy loss. And we know this. All this is essential factor, Garbhakara Bhavas, which has been told by Acharya Charak. Matraj Bhava, Pitraj Bhava, Atmaj, Satmaj, Rasaj, and Sattvas. These are very, I think, deep knowledge and deep concepts what our Acharya has been given to us. And especially we PTS people, we have to think in one-to-one all these factors. What is the Matraj Bhava? All Garbhini Ahar Vihara comes under this. Pitraj Bhava.
the father, the male har, vihar, everything comes under this. Atmaj means it's purva karma of that atma, purva karma, deva sayog, everything comes under this. Satmaj, the what is the har vihar she is taking during that her pregnancy period. Rasaja, what type of rasa she is feeling, and Sattvaja, the mansik bhava comes under this. Any problem in this essential factors will lead to pregnancy loss. We can make our nidana or we can diagnose from here also. Mansic, however, we know in infertility patients, the psychological factors play a very important role, and in RPL patients also, it is very devastating when patients comes with UPT positive, and again after some times bleeding will happen or fetal cardiac activity goes. Even it is devastating for us also. So think what will be the psychological condition of the patient if 4 or 5 pregnancy loss back to back happening. So Manasik Bhav plays a very crucial role that time. And here our Ayurveda plays a very important and beautiful role in these conditions also. And coming to the direct correlation in Yonivyapad, there are 3 Yonivyapad, Putraghni, Vamini, and Asrija. We can correlate with RPL. If we see the shloka of Putraghni Yonivyapad, what Acharya Charak has told, Rakshad Vayur Yada Garbham Jatam Jatam Vinashaye. In Putraghni Yonivyapad, Acharya has told that due to Rukshya Ahar Vihar Sevan, the Vayu will be get Prakupita, and with the Garva, which is being formed by Dushta Shonitajam, it means the Artha Dusti will be there. So it may lead to, that Raksha Vayu may lead to the Garvapat. And it बारम जातम जातम विनाशित, मतलब बार बार गर्भ श्राव होगा. तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वायु वृक्ष गुण से यहाँ पे जब भी हम ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायु शीत गुण से प्रकोपित है या वृक्ष गुण से, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ये चिकित्सा सिद्धांत को इस पर डिपेंड करता है कि आप वायु के वृक्ष गुण को ट्रीट कर रहे हो या फिर वायु शीत गुण से कुपित है और आपको उसको ट्रीट करना है. तो जब भी हम पुत्रग्नि योनिव्यापद को ट्रीट करते हैं तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे वायु वृक्ष गुण से प्रकोपित है. और दूसरा सुश्रुत ने भी इसको माना है, स्थितम स्थितमंती गर्भम पुत्रम पुत्राग्नि रक्त संश्रवा, और उन्होंने इसमें दुष्ट रक्त के संयोग का भी वर्णन किया है आचार्य सुश्रुत ने. अगर हम वामिनी योनि व्यापद देखें तो स वातम उद्गिरेत बीजम वामिनी रस्सा युतम. आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि इसमें 5-6 दिन के बाद, मतलब ओवुलेशन के 5-6 दिन के बाद ही शुक्र अश्रिक से मिश्रित हुए शुक्र को स्त्री अपने योनि से बार बार निकाल देती है. चरक ने 6 और 7 दिन का कहा है. शुक्रम गर्भाशय गतम षढ़ा सप्तरात्रा व सरुजम निरुजम वापी या श्रवेत छातु वामिनी. तो ये पेशेंट वामिनी योनिव्यापद का बहुत ही सुंदर कोरिलेशन हम ल्यूटियल फेस डिफेक्ट के पेशेंट से कर सकते हैं, और इसका ट्रीटमेंट भी हम आगे देखेंगे. कमिंग टू द नेक्स्ट, अस्त्रिजा योनिव्यापद. इसमें आचार्य चरक कहते हैं कि अगर माता रक्त पित्त वर्धक आहार विहार लेती है तो ऐसे आहार विहार के सेवन से योनि स्थित रक्त पित्त से दूषित हो जाता है, और जैसे जैसे स्त्री बार बार लब्ध गर्भा होती है, जैसे ही प्रेगनेंसी पेशेंट कंसीव करती है, यूपीटी पॉजिटिव होता है, तो ये गर्भ अति प्रवर्तित योनिया ब्लीडिंग के साथ या फिर रज के साथ बार बार गर्भ योनि से बाहर निकल जाता है. अति प्रवर्तन मतलब रज का अत्यधिक श्राव के साथ ये गर्भ बाहर निकल जाता है. इसको उन्होंने आचार्य चरक ने अस्त्रिजा योनिव्यापद में कहा है. आचार्य चक्रपाणी बहुत ही सुंदर टीका करते हुए लिखते हैं, यस्याम लब्धे अपि गर्भे अश्री अति प्रवर्तिते. इस जब भी पेशेंट कंसीव करती है तो अश्री की अति प्रवृत्ति से ये गर्भ श्राव हो जाता है, और इसको रक्त योनि भी उन्होंने कहा है. और इसमें अगर हम इसको क्लिनिकली प्रिंसिपल ऑफ चिकित्सा देखें इसमें, तो ये दुष्ट शोणितजर विकार से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, और इसमें हम दुष्ट शोणित की चिकित्सा करें तो हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है. और आचार्य काश्यप द्वारा वर्णित जातहारणी को हम कैसे भूल सकते हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर इसका डिस्क्रिप्शन किया है, हम सभी जानते हैं, हम इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने स्लाइड्स पे रखा है.
Now coming to the management, how we have to do the management when we encounter this type of cases. First of all, to find out the cause is very important. अंधेरे में तीर चलाने से अच्छा है आप प्रॉपर निदान बनाएं. निदान अगर आप निदान प्रॉपर है तो हमारी चिकित्सा भी प्रॉपर हम प्लान कर सकते हैं. टू रेक्टिफाई द एबनॉर्मेलिटीज इफ पॉसिबल, जो भी एबनॉर्मेलिटीज है, अगर एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी है उसके साथ पेशेंट आता है, सेप्टा है, कोई डिफेक्ट है, तो हम उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच से उसको सॉल्व कर सकते हैं. फिर अपनी गर्भस्थापक चिकित्सा करके पेशेंट को कंसीव करा सकते हैं. और आफ्टर कंसेप्शन भी यू हैव टू रिमेन विजिलेंट टिल डिलीवरी, बिकॉज हमारा मेन रोल वहीं पे शुरू होता है, क्योंकि आरपीएल के पेशेंट्स कंसीव तो कर रहे हैं. बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास हिस्ट्री लेके आते हैं 2-3 साल से हम कंसीव भी नहीं कर पा रहे, पर मेनली उनका मेन कॉज ये होता है, मेन कंप्लेन ये होता है, वो कंसीव तो करते हैं बट प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती है. सो आवर मेजर रोल स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. वी हैव टू बी विजिलेंट टिल डिलीवरी. वी फॉलो दैट पेशेंट टिल डिलीवरी. और इसके निदान में हम अपना क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पीएसपीवी एग्जामिनेशन, दर्शन स्पर्शन, एंड many investigation we plan, like USG, we can see the anatomy, HSG by laparoscope. So coming to the chikitsa, what we can do as per Ayurvedic perspective. We know there are our 3 main pillars when we plan chikitsa in according to Ayurveda. First of all, Nidana Parivarjana, second Shodhana, and then Shamana. And preconceptional counseling and preconceptional care, we all know, plays very important role in this type of cases. And it has 3 phases. We prepare the body and the mind. We do Shodhana by Panchakarma, and by yoga and pranayama we stabilize the psychological factors of the patient, and then we go for Garbhadhan Vidhi, and after that we follow the Garbhini Paricharya when patients conceive, or we give proper antenatal care to the patients. So I have written very short because we know the preconceptional counseling. This is the objective to ensure to have that women enters pregnancy with an optimal state of health. And for preparation, what we do, we plan appropriate panchakarma according to doshik involvement. We plan Vachikaran Grid for male and Garbhasthapan Grid to female, proper dietetic regimes, ahar vihar, everything we advise to our patients in this condition. I will just put it some main topics like preparation, Vaman and Virichan. We plan for patients according to involvement. Vasti, after Vaman Virichan in next cycle, we go for Vasti, plays a very important role, because we have seen that Putraghni in Vamini Vat plays, in all of the Yonivyapad, Vat plays a major role. So we have to pacify the Vat that, okay, you sit on your own place in with adequate quantity and quality. So you can plan Vasti. Premenstrual Vasti are also planned by many of the doctors nowadays, like Palasha Denuru Vasti, Dashmul Vasti, Stacharadi Vasti, Satavariyadi Anuvashan Vasti. You can plan accordingly according to the doshik involvement and what factors you get to know the cause of the RPL. So you can plan accordingly. Malatel Vasti, Sachatel Vasti, I use very much. I will just give my own treatment protocol. I use Sachatel Vasti. It gives very tremendous and very beautiful result in RPL patients. Natse, in preconception planning, we give many times we plan Nasvit, Gogrit, Shatavari Grit, Brahmi Grit. If psychological factors are very much involved, then Nasi plays very important role. Sthanik Chikitsa has its own importance in this type of cases, starting with Yoni Parishek, Dhaman, either with Panchavalkal Tripla. Pichu after ovulatory phase, it gives a beautiful result, and it will be helpful in conception also, in continuation of pregnancy also. And Satadhot Grit, Shatavari Adi Grit, Shacharadi Tel Pichu, simply Bala Tel Pichu will also work. And Uttar Vasti, Shastra references also there, Kutaj Kashmari Vasti. One thesis has been done by Dr. Megha Gupta, one PhD thesis in Jamnagar. She has done has seen the role of Kutaj Kashmari Adi Vasti in Uttar Vasti in RPL patients. And it gives very good results in recurrent pregnancy loss.
And when it comes to Saman Chikitsa, we have lots of drugs in form of mentioned by acharyas like Shunit Sthapangan. All the drugs, whatever you see, Madhu, Yesti Madhu, Keshar, Mucharas, everyone has a very good Shunit Prasadan and have very Sthapan, and some drugs have Shunit Prasadan Gun also, and it will help with Shunit Vikar. So you can plan or you can select drugs from this Shonit Sthapan Gand. Prajasthapan Gand plays very good role in Garbhasthapak period after ovulation. We advise our patients some of the drugs, whatever available, easily available, with in combination for Grit, Shatavari, Falagrit, Dadimati, many grits are there. You can use the grit. If even you plan when you are planning Vaman or Virechan, you can select your grit according to the doshik involvement. If in your patient Rakdushti is there, your patient is of psoriasis, Pidika, Kandu is Pradhanta is there, any type of ringworm formation, and if she is telling that Pidika formation is common time to time. So in that patient, better to go for Panchatikta Grit or Mahatikta Grit. And accordingly, you can plan. If your patient have, you want to give some Rasayan effect to the patient, so you can choose Satabri Grit or Falagrit in that type of patient. If your patient have some little face defects, and if you're planning in that patient preconceptional care, so better to go for with Falagrita. If endometrial factors are there, better to go for Dadivadi Grita. So there are lots of options Acharya has given. If psychological factors are involved, patient don't have anything, and some everything is normal, idiopathic is there, so you can go with a Kalyana Grit. So lots of options are there. You have to just what has told in our Samhita's Pursham, which you have to use your Yukti, and you can select your Shaman Aushad. And here I have put it in just a wide view. If there is genetic factors involved in your patient, just go for Shodhana Chikitsa. Varam Vishuddhyate. So any type of karyotype defect you have seen, balance translocation or anything like that. So you have to do Shodhana Varam. Bahudosha Avastha is there. So Shodhana Chikitsa plays very good role. And you can plan Shukra Artha Dosti Chikitsa in that type of patients. LPD related factor, if you are got like in Mamini Yonivyapad, Vata Shamak Chikitsa, you can plan, and it depends either, and we know that Vata Dusri in our body is mainly due to two factors. Either there will be Dhatu Chaya or there will be Avran. So in both the types, your treatment will be changed. So just go with basic Nivan and diagnose your patient due to which factor Vata is aggravated, and accordingly plan your treatment. Stress and emotional disturbance is there. With the drug you can plan. Yoga and pranayama will be helpful for the patient. If any infection is there, treat that cause, particular cause. If local infection, many a times, especially in infertility patient or in RPL patient, uh, many obstetrician, they don't go for PSPV examination. Once patients comes, okay, ye nahi ho raha, ye nahi ho raha, they start treatment. First, do PSPV examination, because clinical examination is very important. Even in infertility patient also, there might, if you are just looking for big factors like ovulatory factor, tubal factor, endometrial factor, everything will come investigation. But don't ignore the local factors, that cervical factor, any type of infection, any type of abnormality in this chart. It is very important to treat that factor. Sometimes they play a very crucial role in subfertility also and in RPL also. And if there is PCOS, hormonal disbalance, Shodhan and Shaman Chikitsa you can plan. In Shastra also, Masanubhasik Garbh Chikitsa is very beautifully described by Acharya Shishru. So let us, this whatever we have talked now this time, it was all whatever written in the Shastra and in the text. Now I am going to share my own clinical experience. I have ma'am has already told, I have, after just my MD, I have joined here. So 9 years of clinical experiences. I have my Janambhumi in BHU and Karmbhumi in IPTGTR. And I was very well fortunate to have to come in contact with very good gurus. So उनसे सीख कर
जो मैंने सीखा है वो मैं आपको आज शेयर करना चाहती हूँ. आई हैव ट्रीटेड मेनी पेशेंट्स ऑफ RPL. ओके. एंड ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट्स, एवरी पेशेंट्स, इट्स नॉट दैट मैं अपनी खुद तारीफ कर रही हूँ, पर सभी पेशेंट्स कंसीव किए. जस्ट कोई 3 महीने में, कोई 4 महीने में, या फिर कोई 6 महीने में, पर कंसेप्शन सभी में हुआ और सभी ने प्रेगनेंसी कंटिन्यू की. इसमें मेन फैक्टर क्या था कि हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेम रखा. ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट्स में हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वाज द सेम. प्रॉपर हिस्ट्री वाज टेकन and proper diagnosis was made. So it was the basic what we say pillars for the our treatment successful. Okay. So here we will see 6 cases. I will just I have given one of my scholar thesis is this year also RPL based on same protocol, and we have put this article on in IU also for publication. First case of first of the my patients, she came before, I remember, before COVID time. She was her patient was here one caste is here. Hital ma'am know I might be Darbar, and she was very good patient. With the predominant prakriti was there. She has one male child, and that child was 7 to 8 years old, and he was Down syndrome child. After that, she has four consecutive pregnancy loss were there, and she has also associated complaint of amlapita, unida, burning sensation, and unibrand dyspareunia, burning sensation during sexual intercourse. All the pitta lakshan, fatigue lakshan we can see in her body. This was her history. It predominant Vata Prakriti was there. And it's very important. She has history of chicken pox 9 years back during her childhood phase. You might be thinking why this childhood history of chicken pox is important. We know that in chicken pox there is eruption of very pedica in all over body. Nowadays it has been eliminated very much, but eruptions of small in all over body. So what it gives you information that that patient is pitta predominant and she has rakta dosti. Since still it gives information about the prakriti of the patient. So please take history of these things, especially if you are encountering RPL patient in your opinion. Chickenpox history is very important in such type of patients. These were her obstetric history. Consecutive 4 pregnancy losses were there, and torch positive. We have gone through the torch profile investigations also. Torch was positive, and husband factors was normal, as you can see here. Okay, autoglination pulses, there were no male factor in this case. Okay, so the result after completion of our preconceptional protocol, the patient was advised to try for conception, and she conceives after 3 months of her treatment. Okay, and the detailed antenatal care was given to that patient, and investigations done, and she had normal delivery at October 25, 2020, and maybe male child was there, 3.2 kg, and she was very happy because her child was normal, absolutely normal, because her age was also, she was 38 or 39, or her husband was 40 years age that time. So she was very happy because her first child, son, was Down syndrome, and she was taking treatment in our comorbid department for that also. And but second child was absolutely normal. So again, the same second case of 4 consecutive loss. You can again see the history. Amlapitta, Mutradah was in that patient's scan report, everything. Torch was positive in this patients also, and she has history of chronic viral fever 5 years back. Okay, and that fever, she was telling that 2 or 3 months back to back after 10 or 15 days, she was suffering from that fever in the whole year. So you can vigilantly check the history. This was his obstetric. I'm just doing fast. This was her obstetric history. She has gone many times DNC also, and sometimes MTP pills also. And again, torch was positive, rubella was positive, although IgG was positive. But again, we have took these things in consideration. Husband semen analysis
was normal. The same protocol we have given in this patients also. Same protocol. Again in 2022, she has delivered healthy male baby, and normally here the delivery was done in our IPD itself. Here comes the third case. Same thing with predominant cough prakriti. She was housewife. Consecutive 2 pregnancy loss was there. Here you can see the Vibandh history was very common, very frequent in that patients. And she has past history of epilepsy also 3 years ago. Medication was going on with modern medicine. Levipil was going on. This was her obstetric history. Torch profile was again positive in these patients. You can see her lupus anticoagulant was also positive in these patients. Okay, and when she comes to our OPD, she has also problem of, you can see MCO. Ma'am has written MCO. She has scanty menses also, and thin line endometrium was also there. So we have taken into consideration, but we have posted these patients also with the same protocol. We have not changed anything. And you can see the main one important finding in this patient, in this couple, her husband was juvenile diabetic, and she has taken treatment with all the renowned gynecologists in Jamnagar and not conceived. And she has not got any result. So she has faith in Ayurveda. So she came to our OPD and she again conceived, and she has healthy male baby, and baby is absolutely fine. Even after delivery of her baby, he goes for glucose test and HB1AC test because her husband was juvenile diabetic, and everything was normal. So no any sign of hyperglycemia or anything. So she was very happy. This case 4, she has 3 consecutive pregnancy loss. After her, she is secondary type of RPL. You can see after first delivery, her first was male boy. Then after her, she has a chickenpox history also 10 years ago. She was, you can see she has chickenpox also, and she was operated for gallbladder stone also, cholelithiasis after her first surgery, after her LACS. All did the pitta pradhanta in her body, pitta pradhan prakriti in that patient. Okay, so this was her history. 3 consecutive pregnancy loss was there. Again, the same protocol. Torch was positive. Case 5, 3 same. She has complained of amlapit, acidity. So what I'm trying to say, history is very important. 3 consecutive pregnancy losses were there in this patient. Again, no husband factor was normal, and Torch was positive, and Apla was also positive in this patients. Okay, you can see the reports. She has multicystic ovary. Ma'am has written here. And she has gone, she conceived in January 24. Recently, she has delivered some months back. The same protocol we have followed in all of the patients. Okay. So what was the protocol we followed? First cycle, we have, when the patient, we have posted patients for any type of medicine patient was taking, we have stopped that medicine. First cycle, we have posted that patient for Shodhana through Virechana. We know that. And especially we have selected that Mahatikta. Okay. And in all the patients, we have seen that Torch was positive. Okay. The Mahatikta Pitta Dushti is there, Rakta Dushti is there. So Mahatikta is very good for that. You can just increase the dose. Here we give in this protocol. You can plan accordingly. You can consult your Panchkarma fraternity for this. Sarvang Abhyang with Balate and Virichan we have given with Trivritavle. According to post, you can do some changes in this Trivritavle, Avapatikar, you can Guntrigunaditya, you can plan accordingly. But with you should select Mahatikta grade. Okay. And in second cycle, after Virechan and proper Sansarjan was done, in second cycle, we have posted the same question for Rakta Mokshan, because you know Rakta Mokshan in Rakta Dusti Vikara, Acharya Shushruta has told Rakta Mokshan is Ardha Chikitsa. Like Vasti Acharya Charak has told Vat Vasti Ardha Chikitsa, same Acharya Shushruta has told Rakta Mokshan. So Rakta Mokshan we have performed after cessation of menstruation cycle. After taking, we have called our patients after taking liquid diet. So 30 to 40 ml blood you have to
I'm not going to discuss in detail about the method of Rakta Moksha because we have less time. We have to finish also. So I have put it very important, 30 to 40 ml blood from cubital fossa. We have to just take out. And after Rakta Moksha, we know after Rakta Moksha, Mat Pradhanta will be there. So we have posted that patient for Basti, Matra Basti. So Basti only selected oil, Sacha Tel Basti. You have to plan in 60 ml dose once in a day, Bhojan Paschat for 7 days. Because why Sacha Tel? Because Sacha Tel has very good and beneficial role. It mainly regulate the Apan Vayu. Okay, there are many theses have been done also. Sacha Tel has very good effect on ovulation induction also. Even you can plan Sacha Tel Nasse in pre-ovarian failure patients also. Where you want to do ovulation induction, you can plan Nasi with Sachatel also. But in RPL patient, I give Sachatel Matravasti. Okay. So even in one of the thesis has been carried out the role of Sachatel in tubal blockage. So it gives good result in tubal blockage patients also. So Sachatel is very good. And in the next cycle, very next cycle, in third cycle, we have planned Uttarvasti with Falgreta for the Kshetra Shuddhi. Okay, you have to look for all the things. Bija Shuddhi, Kshetra Shuddhi, Sharir Shuddhi, everything. So Falgrit for 3 days, 7th, 8th and 9th day, we have planned, posted that patient for Uttarvasti. And you know all the Purokarm, Pradhan Karm, how you do. We do. And after this protocol was completed, we have given all the patients same medicine in between when the Matravasti or Uttarvasti was completed for 3 days. Paripatadikwat, 20 ml BD with water, Raktapachak Vati, 2 vatis before food twice a day, Rajanyadi Chun, 3 gram before food. You can see अविपत्तिकर गुरुची एसटी मध्ये उदंती all are Pittashamak, Rakta Prasadak, Rakt Sthapak, Swarna Makshik Bhasma and Praval. 2 Rashoshad I have been used in this all these cases. Swarna Makshik and Praval Bhasma. And tablet torsion of Philips pharmaceutical, 1 capsule twice a day. If you don't get torsional capsule, you can also pose the patient for Guruchi Shanshabdi 2 TBS. But nowadays, torsion is very common. You can get from any pharmacy. And when patients conceive, this was the treatment regime, what we have planned. Capsule Falova, either you can give Falova or either you can give Falgrit also. Torsional will be continued. And Bala Shatavari Guruchi Brahmi. And same, you can see the same formulation. Same drug. Avipattigar Guruchi, ST Godanti, Swarna Makshik and Praval Bhas. It was, and you can say that in pregnancy you are giving that rush ocean. But I can tell you that in all of the patient we have continued this thing, and we have seen no any complication, no any congenital anomaly, nothing. Sorry, the dose is a little bit more. But it's not that this you have to give in one form. You can just ask your patient to take 3-4 gram of Avipattikar, Guruchi, ST, Gudanti, and add 500 gram Praval and Swarnmachik and keep that and take 1 tablespoon 2 times in a day after food with water. So same thing we have continued in pregnancy also. And one more thing I have not, I just forgot to mention here. Chandan Bala Lakshadi Tel Basti in pregnancy. When patients conceive till 3 months, every week, once in a day, I was giving every week, weekly once. And after 3 months, every 15 days, and after 6 months beyond, you can give once in a month. Okay. So Chandan Bala Lakshadi Tel Basti was continued in pregnancy also. Many people might think that we cannot give Basti in Garbhini. But if you remember the thing that Atyayik Chikitsa in Garbhini, where Acharya has mentioned that if there is an emergency, because patient has RPL, we know that every time she loses her pregnancy, so then you can plan with your Yukti. So Yukti is very important because Acharya Charak has told that I am writing this Grantha only for average people. But you can plan according to the Prakriti, according to the Vikriti, according to the Desh, you can plan your treatment according to your
patient and according to the need of the patients. So, with concluding my lecture, what the main dosha we can think when we plan the chikitsa, many things are given in run, but practically when we plan, we can think that Vata and Pitta predominance is more along with association of Rakta Dusti. And we can plan the treatment of Virechan. Why Virechan we have selected? Because Yoni Roga, Shukrashaya Roga, in everything, Acharya Shushut had mentioned and Acharya Stang also mentioned. These all Roga are Virechan Shadhi. So Virechan Shodhan of the patient is very important. Again, you have to look for the Yogita and Agita of the patient. My patient, last patient has very less BMI. So, Ritu Virachan, you can plan. You can consult your Panchakarma uh, friends or faculties, and accordingly, you can plan Virachan in that patient. You can alter the dose, modify the dose according to the bulk of the patient. Paripatha Dikavat, why we are selecting? It has very good Pitta Shamak property. Paripatha, Indriya, Musta, Parpat Guruji, Estimadu. It contains all the Shonit Prasadan and Shodhandra. So we have selected that Paripatadikwa Swarnamakshik. It has very good Rakta Gata Dhatu Dusti, and Praval Bhasma is also Pitta Samak. All the drugs are Rakta Prasadak and Pitta Shamak. So we have selected this drug very vigilantly, and you can plan accordingly also. You can modify the treatment, but what the basic principles you have to keep in your mind, you have to do proper nidan, take proper history, and plan accordingly. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। धुआंधार स्पीड के साथ बम्बार्डिंग और बहुत सारे पॉइंट्स है, और मुझे लगता है कि मुझे बहुत बार बच्चे बताते हैं कि मैडम नोट्स बनाने पड़ेंगे और जल्दी से वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो मैम आपने कहा था 1 घंटे है, तो मैंने 1 घंटे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत आप जैसे सभी स्पीकर का और आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है कि हमारे स्कॉलर्स, हमारे चिकित्सक, हमारे स्टूडेंट्स नॉट अ जॉब सीकर बट जॉब प्रोवाइडर, है ना, कि लोगों को जॉब देनी, आयुर्वेद के कारण कम से कम 3 लोगों को जॉब तो मिलनी ही चाहिए। तो मुझे कई बार लगता है कि हम 12 लाख चिकित्सक है ना, जो इंटरनेट से ही मुझे पता चला था कि भी 12 लाख चिकित्सक है, तो 12 तेरी 36, 36 लाख लोगों को आसानी से नौकरी मिल सकती है। जी मैम। हाँ जी, तो आप जैसे चिकित्सकों को बहुत बहुत नमन कि बहुत अच्छी तरीके से आपने पूरे विषय को रखा, और मैं समझती हूँ कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, केस स्टडी के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स उससे अपनी चिकित्सा में इजीनेस महसूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो उद्देश्य है कि भाई वो बहुत अच्छे क्लिनिशियन बने, वो कहीं ना कहीं परिपूर्ण होता है। डॉक्टर विधि ने अपना हैंड रेज किया है। डॉक्टर मैम मेरा ये टॉपिक सेलेक्ट करने का मोटो यही था कि मैंने जब इस प्रोटोकॉल का, मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ से सुना, किसी सेमिनार में सुना, और पर सभी गुरुओं से ही हम सीखते हैं। आयुर्वेद एक ऐसा ज्ञान की प्रथा है जो गुरु गुरु परंपरा चली आती है। तो एक प्रोटोकॉल बनाया, और जब मैंने इसके रिजल्ट देखे मैम कि हर पेशेंट्स में देते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्टर्स, एनाटॉमिकल फैक्टर नहीं होना चाहिए मैम, बाकी चीजें एनाटॉमिकल फैक्टर है तो ऑब्वियसली हमें कुछ दूसरा फिर इंटीग्रेटिव अप्रोच है, सेप्टम है, डाइडेल्फस है, यूनिकॉर्न। पर अगर ये सब है, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, या फिर टॉर्च प्रोफाइल पॉजिटिव है, या इडियोपैथिक है, सो आई हैव गिव वेरी ब्यूटीफुल, आई हैव सीन रिजल्ट ऑफ दिस। दैट्स वाई मुझे लगा कि मुझे भी बताना चाहिए कि सभी लोग इसको कर कर देखें और अनुभव करें, और हमें भी शेयर करें कि उन्हें कैसा रिजल्ट मिलता है। इसके बाद ही मैम मैंने फिर अपने एक स्कॉलर को आरपीएल, फिर सेम प्रोटोकॉल पे, थोड़ा सा एथिक्स की वजह से हमें वो फिर वस्तीन, गर्भिणी, ये सब फिर ध्यान में रखना पड़ा, पर सेम प्रोटोकॉल हमने उसको दिया, एंड शी इज जस्ट रनिंग हर स्टडी। लेट अस सी, बट इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट मैम। बहुत बहुत बढ़िया, और बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक लेक्चर रहा। डॉक्टर विधि, आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो डॉक्टर विधि, या तो शायद उनसे गलती से हो गया।
हाँ, डॉक्टर शशि, एक मिनट। जी डॉक्टर शशि, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो डॉक्टर शशि यादव। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ डॉक्टर साहब। हाँ, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। प्रश्न तो नहीं है क्योंकि मुझे इसके लिए अभी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बस मैंने थैंक यू कहने के लिए हैंड रेस किया था। क्या बात आपने है। इतने कम इतने कम समय में इतना कुछ ज्ञान दिया, इसके लिए मैंने कहा कि मैं एक बार मैम को अपने ओर से थैंक यू बोलूं करके। क्योंकि बहुत प्रेगनेंसी नहीं हो पाना ये बहुत बड़ी समस्या होती है एक महिला के लिए। सारा जो मेंटली प्रेशर, जैसे शादी के बाद एक साल 2 साल के बाद जैसे जैसे वो होते जाता है उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कोई भी कारण नहीं होता और उसके बाद भी सारा दोषारोपण एक महिला के ऊपर किया जाता है। तो आपने इस विषय को इतने अच्छे से बताया, इसके लिए बस धन्यवाद कहना चाहती थी मैं। थैंक यू सो मच मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शशि यादव। डॉक्टर बलजोत मैडम भी हमारे बीच में है, बहुत बहुत वेलकम मैडम, और स्वागत है। थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। जी आपको भी नमस्कार मैम। और नमस्कार डॉक्टर सिपिका, मेनी यस कंग्रेचुलेशन। मैम। बहुत अच्छी थैंक यू मैम। प्रेजेंटेशन थी, हमने भी सीखा। और ये प्रोटोकॉल जो है बहुत प्रैक्टिकल है और साइंटिफिक भी है। सो थैंक यू सो मच आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू मैम, आप जैसे सीनियर्स हैं हमारे इंस्पिरेशन। मैम से मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ जब से मैम यहाँ पे सीएमई विजिट किए हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, मैम। बहुत कंग्रेचुलेशन। बहुत धन्यवाद डॉक्टर बलजोत जी। थैंक डॉक्टर यू मैम। किमाया, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। डॉक्टर किमाया। हाँ मैम, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, शायद मैम की तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैम ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया है और बहुत यूजफुल है। मैम आपने रक्तमोक्षण का कहा, तो उसके पहले भी स्नेहपान दिया था क्या 2-3 दिन ऐसे? नहीं नहीं डॉक्टर की माया, ऐसा क्योंकि 30-40 ml हम कर रहे हैं तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया था। क्योंकि उसके पहले ही साइकिल में हमने विरेचन करा है तो स्नेहन वगैरह पर। हाँ, मैंने बोला ना कि आप जैसे कि सर्जरी एक्सपर्ट हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट में आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसे स्नेह की जरूरत है, देन यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। इसलिए मैंने वो स्लॉट छोड़ा था। क्योंकि रक्त मोक्षण हम पीटीएसआर वालों से थोड़ी बियॉन्ड की है, सर्जरी वालों की प्रैक्टिस ज्यादा होती है। तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। 1-2 पेशेंट मेरे ऐसे थे जिसमें मुझे वात के ऐसे लक्षण लगे थे, तो प्रविचारणा में स्नेह मैंने दिया था यवागु के साथ उन्हें 2-3 दिन पहले। और सेम डे जिस दिन हम रक्त मोक्षण के लिए पेशेंट को बुलाते हैं, उस दिन मॉर्निंग में भी उनको ऐसा ही डाइट आप लेकर आने को कह सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। अगर पित्त प्रधानता है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ वात प्रधान पेशेंट है तो, और तो फिर पित्त प्रधान है तो ऑलरेडी दोष उत्क्लेशित है। वात प्रधान पेशेंट है और आपको ऐसा लगता है तो फिर आप स्नेह प्लान कर सकते हैं। एंड यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर सर्जरी पीपल ऑल्सो, शल्य पीपल, इन इफ यू एनकाउंटर सच टाइप ऑफ डिफरेंट पेशेंट्स, देन यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है मैम। जी मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर विजेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विजेंद्र जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो। हेलो जी मैम। नमस्कार मैम। और डॉक्टर सिपिका, आपको बहुत बहुत नमस्कार बॉस। बधाई। बॉस मेरे सीनियर है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये शुरू से जो सुनना चाहता था, थोड़ा एक्चुअली मेरे यहाँ एनसीआईएसएम का पार्ट 1 फीलिंग था, तो मुझे थोड़ा टाइम दे के आना पड़ा। मुझे ये लेक्चर छूट रहा था, मैं देखूंगा फिर से मैं यूट्यूब पे भी। और मैं कई बार लेक्चर से जुड़ना चाहता हूँ, नहीं जुड़ पाता हूँ, कुछ और भी प्रॉब्लम्स रहते हैं तो। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। बीच में ही मैं ज्वाइन किया था, उस समय मैनेजमेंट पोर्शन शुरू हुआ था। मुझे ये जान के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर शिपिका वहां से बहुत अच्छा कर रही हैं। और ऐसे जो अपने केस स्टडीज या केस सीरीज जो आपने प्रेजेंट किया, उसमें हमें भी कुछ करने के लिए मौका मिलेगा, क्योंकि इसमें एक आपने कॉमन प्रोटोकॉल डेवलप हाँ किया जी है। बॉस, जी बॉस। हाँ डेफिनेटली इस तरह के प्रोटोकॉल्स अगर बनेंगे तो कुछ हमें भी शायद यस कर बॉस। करके
हमें भी एक आएगा कि हाँ पीजी स्कॉलर्स को उस डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं या कुछ नए फाइंडिंग्स के लिए कुछ और एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। मैम को बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और डॉक्टर सिपिका जी आपको बहुत बहुत बधाई, और आपके धन्यवाद ऐसे लेक्चर्स के लिए हम लोग फिर वेट करेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। सतीश जी का भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बड़ा साथ सहकार रहा जब डॉक्टर साहब यहाँ जयपुर में क्लिनिकल रजिस्ट्रार थे। मैम हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम। इमरजेंसी होती थी, है ना? तब तो सिर्फ एनआईए के टीचर्स ने 250 लेक्चर तक साथ निभाया है और मैं सबके प्रति कृतज्ञ हूँ कि आप सब साथ नहीं निभाते ना तो ये 10वें साल चलता नहीं, है ना? जी क्योंकि जी एक व्यक्ति कैसे पढ़ा सकता है इतना, है ना? अथाह सागर है, मगर विभिन्न-विभिन्न व्याख्यानकर्ता स्पीकर्स जब मिल जाते हैं तो हम बहुत अच्छी तरीके से उस विषय को वहाँ रख पाते हैं और मुझे लगता है चरक मुनि को भी अच्छा लगता होगा कि यार क्या बात है कि मेरी बातों को आज भी इतने सालों बाद भी लोग इतना अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल। एक लेक्चर तैयार रखिएगा इमरजेंसी वाला। जरूर जरूर मैम। आपको मैम ये एक ये प्रयास ऐसा रहता है कि जो कि मतलब अगर कोई लाइव नहीं जुड़ पाता है तो वो यूट्यूब के जो आपके चैनल्स होते हैं, मैं कई बार कभी खाली रहता हूं तो आपके वो मैम चैनल्स पे कुछ अच्छे अच्छे लेक्चर्स को मैं सेलेक्ट करता हूं जो मेरे लायक मतलब बनते हैं, जो पीटीएसआर सब्जेक्ट से रिलेटेड रहते हैं, तो मुझे बिल्कुल वो दोबारा पढ़ने के लिए मौका मिल जाता है। मैम आपका ये प्रयास तो सच में कहें कि कोई ऐसा कर नहीं सकता है, और आप इतनी लंबी सीरीज आप लगातार चला रहे हैं मैम, ये निश्चित रूप से आप मैम बधाई का पात्र है मैम। और आप तो कहें कि एक दूसरे जो आ रहे हैं पीजी स्कॉलर उनके लिए कंटिन्यूस ये लेक्चर मिल रहा है, ये आपका बहुत अच्छा प्रयास है मैम। बहुत धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर साहब, मगर वो आप सभी के साथ ही है ना? एक मैम। आत्मा है, एक बच्चों होता है, तो बस आत्मा आप सभी लोग हैं और इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन के कारण ही चल रहा है और बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बल्कि मुझे कुछ जगह से है ना ऐसा भी मिला था कि मैडम आप अपलोड मत करिए तभी लाइव लेक्चर में लोग आएंगे। तो मैंने बहुत सारे लोगों को कहना शुरू किया, है ना? मैंने कहा बेटा ज्वाइन करना, है ना? ऐसा मत किया करो कि सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग सुननी, है ना? क्योंकि नहीं नहीं मैम, ये तो आपका कहना सही है कि एक जो लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है उस व्यक्ति को भी बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम वो डायरेक्टली एडेड होता है उन जो कहें श्रोताओं से, बिल्कुल तो मैंने उसका एक मनोबल बढ़ता है मैम। बिल्कुल मैंने आपका कहना यही बात सही बहुत स्टूडेंट्स को कही थी। मैंने कहा बेटा देखो जो अमूल्य ज्ञान निधि दे रहे हैं हमें, हम उनको 1 रुपया भी नहीं देते, है। हाँ है ये ना? बात तो सही है मैम। एक अच्छी ऑडियंस देने का मेरा बड़ा मन करता है और मैं ये सब शुक्रवार के ठीक है। दिन एनआईए में मिलने वाले 50 स्टूडेंट्स को कह रही हूँ, मैंने कहा बेटा आज शुक्रवार है। हाँ है ना? ये क्योंकि हमेशा मैम आप शुरू से ही ऐसा कहते थे मैम। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुझे जी लगता है कि स्पीकर को ऑडियंस देख के बहुत कुछ ऐसे लगता है कि नहीं मेरा प्रयत्न, मैंने स्पीकर का प्रयत्न व्यर्थ नहीं है जी मैम। कि लगातार ऐसे क्लिनिकल बातें डिस्कशन संभाषा हमारी होती रहे तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद लक साहब। धन्यवाद मैम। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। डॉक्टर किमाया, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हेलो डॉक्टर किमाया। सॉरी मैम, वो गलती से रह गया था, सॉरी जी सॉरी। जी जी हाँ जी पूछिए बेटा। नहीं मैम, गलती से मेरा हैंड, वो पहले हैंड सॉरी रेज सॉरी था ना, ऐसा वही ऐसा रह होता है। ओके गया। ओके ओके ठीक है। डॉक्टर उज्ज्वला यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। धन्यवाद मैम, जी बहुत ही अच्छा था सेशन। मुझे एक प्रश्न था, जैसे कि आपने बोला कि पीसीओडी के केसेस में फीटल जैसे हार्ट बीट कम हो जाते हैं बाद में, तो ऐसे ही मेरी एक पेशेंट में हुआ था जो पीसीओएस की थी और वो 7-8 साल से कंसीव ही नहीं हो पा रही थी। तो मेरे पास आकर वो कंसीव हो गई, पर उसको जैसे फर्स्ट मंथ में ही जैसे 7th वीक में ही उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद तो वो मेरे पास आई नहीं, जस्ट उसने दिखा के फिर वो एलोपैथी में चली गई। तो मैम तो ये तो मुझे पहले पता नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है, तो आपके अभी इस सेशन में मुझे पता चला, तो धन्यवाद इसके लिए। तो अभी आगे जाके अभी आपने जो बोला कि गर्भस्थापन करने के लिए, तो फिर हमें उसमें क्या गर्भस्थापन के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि इसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया,
पेशेंट को, तो उसमें क्या विचार करें? उज्ज्वला, देखो वो उसमें डिपेंड करता है कि ब्लीडिंग फिर आप ऐसा कंडीशन होने ही नहीं दो ना, मेरा तो ऐसा ही मानना है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब हमें जी पहले से मैम, ही मुझे विजिलेंट पता रहना नहीं है। था, सॉरी मुझे पता नहीं था मैम। कब मैंने, क्योंकि मैंने अभी प्रैक्टिस थोड़ा 2-3 साल से स्टार्ट की ना, तो मेरा ये पहले ही पेशेंट था कि जो कंसीव हुई थी मेरे पास, और उसको ऐसे हुआ था। तो अभी मैंने वही बोला कि मुझे अभी पता चला आपके लेक्चर में कि ऐसे हाँ, पीसीओएस हो सकता है। वैसे ही डॉक्टर उज्ज्वला हम लोगों ने भी कर कर के ही सीखा है, कुछ गुरुओं से सीखा है, कुछ खुद पेशेंट्स भी सिखाता है हमें। फिर तो मुझे ऐसे ही लगा, जो मैंने देखा कि पीसीओडी पेशेंट्स में एक तो कार्डियक एक्टिविटी आती भी लेट है बहुत सारे पेशेंट्स में, और बहुत सारे पेशेंट में ऐसी हिस्ट्री मिलती है, आती है फिर चली जाती है, या फीबल आती है। तो हमें शुरू से ही, अगर हमारा पीसीओडी पेशेंट कंसीव कर रहा है, तो द डे वो यूपीटी पॉजिटिव लेके आना है आ रहा है, तो आपको उसको गर्भस्थापक, अगर वो आरपीएल का पेशेंट है, ठीक है, आइदर वो पीसीओडी की वजह से है तो कैसे भी है, तो आपको सेम ही प्रोटोकॉल पे जाना है। पहले भी उसके 2-3 लॉस हो चुके हैं। अगर फर्स्ट टाइम पेशेंट कंसीव कर रही है, तो जो भी गर्भस्थापक औषधि है आप उसको प्लान करें। बला है, शतावरी, गुड़ुचि, ब्राह्मी, गर्भ चिंतामणि रस है, यू कैन गिव इन दैट पेशेंट। इवन गर्भपाल रस लोग बोलते हैं 5वें महीने के बाद हमारा देना सेफ रहता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन। पर आप उन अनएक्सप्लेन्ड प्रेगनेंसी या ऐसे केसेस में गर्भपाल रस अगर द्राक्षास्वरस के साथ दें, या फिर गर्भ चिंतामणि रस, तो भी पेशेंट का हमारा आउटकम बहुत अच्छा हमें मिलता है। प्लस चंदन बना लाक्षादी तेल की बस्ती, अगर वो बार बार ऐसा ब्लीडिंग हो जाता है पेशेंट को, तो आप उसको प्लान कर सकते हैं। अधोदर हम पीछू भी प्लान करते हैं, वो भी हम दे सकते हैं उदर पर तेल से, या फिर शतदोत घृत से। ये सब भी बेनिफिशियल होता है पेशेंट में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, दैट इज प्री कंसेप्शनल प्लानिंग, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर अक्षता पूछ रही है, इफ पेशेंट कम्स आफ्टर कंसेप्शन विथ हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन, देन जस्ट समन चिकित्सा विल हेल्प टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी? Dr. Akshita, then we have to counsel the patients, because we have done our half task, so we cannot guarantee. We cannot take guarantee. You can follow up the protocol after conception, whatever I have told, but we cannot guarantee it to that patients. Even I cannot, because I told my patients, बिकॉज चरक ने भी कहा है कि अगर कुछ ऐसे पेशेंट आए तो आप उनको पहले ही काउंसलिंग करके, फिर क्योंकि आपका अपयश ना हो, तो आपको पेशेंट को पहले ही बताना है कि हम ऐसे, हमारा ये प्रोटोकॉल है और हम प्री कंसेप्शन से देते हैं, पर आप हमारे पास कंसीव करके आएंगे, देन यू हैव टू लिटिल टू डू, बट वी स्टिल वी ट्राई। ओके, पर फिर भी ये प्रोटोकॉल बहुत हेल्प करता है। 1-2 पेशेंट मेरे ऐसे जो कंसीव करके अर्ली यूपीटी पॉजिटिव लेके आए हैं, और हमने दिया है, एंड वी हैव सक्सीडेड इन सब पेशेंट्स। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी ने हैंड रेज किया है, तो आप किसी न किसी ग्रुप में बेटा मेरे साथ जुड़े हुए होंगे। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं जिनको अनम्यूट कर रही हूँ उन सभी को मैं जान रही हूँ, है ना? तो इसलिए मैंने अनम्यूट किया है। थोड़ा सा अच्छे एक्सपीरियंस बीच में नहीं रहे, इसके कारण ओपन डिस्कशन सेशन हमें थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ा, और इसलिए रजनीश जी आप अ, मेरे व्हाट्सएप नंबर में कहीं ना कहीं जुड़े रहे होंगे, क्योंकि मैं वही 10 एक ग्रुप में ही मैसेज डाल रही हूँ, तो आप वहाँ मुझे पूछ सकते हैं। आई विल टेक योर क्वेश्चन, और ये अच्छा रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमने बहुत अच्छा लेक्चर सुना, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसकी सराहना भी की है, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर हम यहाँ आयुर्वेद के झंडे गाड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद जिस प्रसिद्धि, नाम, यश और कीर्ति का हकदार है, हमारी साइंस जो हकदार है, वो हम उसको दिलवा पाएंगे, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ आने के लिए, हमारा निवेदन नमस्कार जी। स्वीकार करने के लिए, और इतनी अच्छी अपनी ज्ञान विज्ञान की बातें हम सभी से शेयर करने के लिए विश्व परिषद की ओर से तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपने भी मुझे अवसर दिया कि हम। इमरजेंसी लेक्चर भी तैयार रखिएगा। जी मैम, जी मैम, जरूर मैं कोशिश करूंगी अपने क्लिनिकल उसमें से, एक्सपीरियंस में ये से। कभी ना कभी कुछ इमरजेंसी हो जाती है, तो फिर कुछ आप जैसे लोग मिल जाते हैं, तो
फटाफट है ना रिप्लेसमेंट हो जी जाती मैम। है। और जी यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, आशा करती हूँ मैम आपकी ये परंपरा चलती रहे। हम बिल्कुल हमेशा इसमें सहयोग देने के लिए तैयार हैं मैम। जैसे लोग होते हैं ना, अभी दीपा मिश्रा मैडम के जी साथ मेरी मैम, लगभग आपने 4-5 बताया महीने था। पहले बात हुई थी ना। मैंने कहा मैम स्पीकर नहीं है, कहते बिल्कुल हाजिर है। तो इतना अच्छा लगा ना, मुझे ऐसे लगता जी है कि मैम। बस अमृत पान कर लिया मैंने, है ना। तो कानों में भी शहद घुलता है, ऐसा लगता है कि मैंने कहा पता है, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत सारे स्पीकर्स जैसे इमरजेंसी स्पीकर को पूछ चुकी थी और सभी उस दिन बिजी थे, है ना। कहीं जी ना मैम। कहीं हम किसी को समय हाँ हाँ। कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर नहीं हो पाता। तो फिर मैडम ने फटाफट, है ना। और मैं बीएचयू गई थी तब भी मैंने मैडम का बड़ा हार्दिक धन्यवाद किया। मैंने कहा मैम उस दिन तो बचा लिए थे आपने, ऐसे। तो आप जैसे स्पीकर जब साथ निभाएंगे तो ये आयुर्वेद का यज्ञ, है ना, बिल्कुल अनवरत चलेगा, है ना। श्योर मैम। बहुत बहुत मैम और मेरे एक रिक्वेस्ट भी है, आप अपना भी लेक्चर रखिए मैम, आप बहुत सीनियर है, मैंने आपका लेक्चर सुना है यहाँ इनफर्टिलिटी पे। हम आपको भी इस प्लेटफॉर्म पे सुनना चाहेंगे मैम। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपना तो बहुत इमरजेंसी में रखा है। मैंने कहा कहीं कोई नहीं मिला ना, तो उस दिन तो मुझे करना पड़ेगा कि बच्चे आज तो मुझे ही सहन कर लो फिर। जी जी, बिल्कुल, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र ले रही हूँ, आप सभी भी दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः सभी पार्टिसिपेंट्स का और आज के स्पीकर का तहे दिल से धन्यवाद। अपने अपने स्थान पे आयुर्वेद के लिए आप प्रतिबद्ध होके, कटिबद्ध होके अपना अपना योगदान देते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।